Good evening, everyone. Quick audio check before we begin. Am I audible and visible to everybody? Good evening. Quick. Tell me, am I audible? Visible, somebody said. Ria said, ma'am, you're visible. So am I audible as well? Yes? Chalo, great. Okay, in that case, let's begin. Okay, so what is today's session on? Today's session is on this very often occurring topic in your exam. I wouldn't call it very complicated, but yes, it gets a little confusing because it is kind of an exception to the general rule which we always study under contract law. As per the contract law, we always study that these basic ingredients have to be there. If they are there, then it is going to be a valid contract, right? So whenever we look at the contract, whenever we are looking at a contract, what are certain basic ingredients of a valid contract? As per the Indian Contract Act, these are certain essentials which have to be present. If they are there, then that particular agreement will turn into a contract. And why do we need it to turn into a contract? Can anybody help me with that? Why is it that we need that agreement जो है वो contract बन जाना चाहिए? Why is it essential? Agreement को agreement ही रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है हमें? Why do we have to make it into a contract? Yes, quickly type in the chat box a very simple basic question. I want everyone to obviously know the answers. One of those things that, oh, why even asking that question, but still. Okay, yes, Ali, Anshika, Ria, they're telling me to make it enforceable, right? To ensure कि भाई कल को अगर उस agreement के terms and conditions किसी ने नहीं मानी, breach commit करा, then do I have the right to actually go to the court? Can I go to the court to ensure that those rights can be, the person can be made to do his part of the contract? कि जो भी पार्ट था उसका बार्गेन का, मान लो उसको पैसे देने थे या उसको कोई गुड्स देनी थी, कुछ सर्विसेज देनी थी, या फिर वो मुझे वो गुड्स एंड सर्विसेज दे, राइट? और इट कुड बी दैट आई वुड वांट दैट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे बट कॉम्पेंसेशन तो मिले, राइट? तो इन एनी ऑफ दोस सर्कमस्टांसेस इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल, तभी आप ऐसा कोई भी केस कर सकते हो. अदरवाइज यू डू नॉट हैव द राइट टू गो टू द court, right? Okay, yes, I think everybody, that's what everybody is saying. Legally binding, legally enforceable only then a contract, otherwise it is merely an agreement, right? So how do you know that this agreement is legally enforceable or it has become a contract? Generally not something you need to remember, frankly, for CLAT, but section 10 जो हमारा Indian Contract Act का है, वो हमें बताता है कि भाई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या essential ingredients होने चाहिए, right? So these are the few things which have to be present. There has to be an agreement, which means offer and acceptance should be there. The parties who are entering into the contract should be competent, meaning thereby भाई minor नहीं होना चाहिए, unsound mind का नहीं होना चाहिए, law ने forbid नहीं करना चाहिए. That means अगर आप insolvent हो गए or you are a criminal, you're a convict, convicted person, तो law आपके ऊपर restriction लगा सकती है. For you might be forbidden or restricted by law, right? तो वो नहीं होना चाहिए. Lawful consideration, there has to be consideration, obviously, there's something which has to be there. अगर आप mutually एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करोगे under a contract, तो फिर वो contract होगा ही नहीं, right? For it to be valid, there has to be some give and take between the parties. That is your consideration. Object कि भाई purpose क्या achieve कर रहे हो आप contract के लिए, वो भी lawful होना चाहिए. And of course consent has to be free. There has to be consent firstly, and कैसा consent होना चाहिए? Free. तो ये जो आपकी चीजें हैं, अगर ये सारी हुई तो आपका agreement जो है वो contract बनेगा, right? So normally we say if any of these is missing, then that
particular agreement will not be a contract. All of them have to be there. Like it is like all. It is not कि अगर एक आधा missing हो जाए तो फिर भी वो contract है को नहीं. अगर कुछ भी missing होगा, offer, acceptance, competence, consideration, इनमें से कुछ भी missing होगा, then your contract is not going to be enforceable. That's one. Now exception क्या है इस rule का? एक concept है यहाँ पे जो कि section 10 में ही दिया है. Section 10 itself carves out this particular exception. And what is this exception that has been carved out? The exception which has been carved out says that it should not, or your agreement, जिसको आप contract बना रहे हो, it should not have been specifically declared as void under the act. तो एक्ट में ही आपने there is a particular chapter which is talking about some agreements which are going to be void. Void meaning not enforceable, invalid. कुछ ऐसे agreements आपके invalid होंगे जिनमें ये सारी चीजें exist करती हैं, फिर भी हम उनको valid नहीं मानेंगे. Right? So that is why it is an exception to the rule कि अगर ये सारी चीजें हुई तो वो agreement आपका valid हुआ. Right? Now let's move on. Vrinda, I will be taking up contingent contracts. Okay, so don't worry. I've seen your comment, and in fact, it's part of what we're doing. Okay, chalo, let's move on now and start with what are the various kind of void agreements. We're going to pick up each and every one of them in detail today. Okay, so when you're talking about void agreements, we are saying any of those elements not there, तो अग्रीमेंट क्या होगा आपका void या voidable होता है. voidable normally हम no free consent situation में करते हैं. I think most of you would know वो हम coercion में बोलते हैं कि भाई consent तो था पर free नहीं था. तो आपका contract क्या होता है? voidable, meaning that till the time it is not avoided, it is valid and it can be avoided only at the option of one party. ठीक है, दोनों parties उसको avoid नहीं कर सकते. That's your general voidable principle, right? So those are those 4 no free consent situations. We are not going in for we're not going to the in detail explanations of those concepts. That's not what the agenda for the day is. Okay, so let's just come back to the agenda for the day, which is talking about agreements which have been declared void by law itself, right? So when you are talking about agreements which have been declared void by law, these are the ones which have been. You have agreements in restraint of marriage, trade, legal proceedings, uncertain, and wagering. So let's start with the first one. The first one here is talking about agreements whose meaning is not certain. This is something which you might have come across in your PYQs. वहां पे उसको हम agreement को void agreement नहीं बोलते, but simply the question which normally comes is that whether this agreement would be valid or not. And there what you have to look at is whenever there is an agreement, the agreement should be such that it is not vague, it is not uncertain. There is certain clarity as to what is it that the parties are promising to do under the contract. तो अगर वो उसमें clarity नहीं है, then again that particular contract is supposed to be void, right? Like the act itself gives you this example which comes in your exam also very often. You know, in which they say there's a contract between 2 people, A and B. भाई fruit seller थे, A और B हमारे, और A ने बोला B को that boss, I will buy from you, let's say 100 kgs of fruit at 200 rupees per kg, right? तो आपने 100 kg of fruit at 200 rupees per kg की deal करी, right? Now, if it is given in your question that B is a seller of oranges, फिर ये contract क्या होगा? Valid, right? Because there is a certainty as to what are you talking about. On the other hand, अगर B जो है orange भी sell करता है, apple भी sell करता है, banana भी sell करता है, mango भी sell करता है, then in that case, will this agreement between A and B, wherein A is offering to buy 100 kgs of fruit at 200 rupees a kg, will this be valid? Valid or not valid? Because here now he's selling all these different type of fruits.
if he's selling all these different types of fruits, that means which fruit are you talking about? है ना, uncertain है. Yes, Nimisha is saying no. Why? No, because it is uncertain. भाई उसको बनाना चाहिए, एप्पल चाहिए, मैंगो चाहिए, ऑरेंज चाहिए, कौन सा फ्रूट चाहिए भाई, कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी फिक्स्ड है, प्राइस भी फिक्स्ड है, बट देयर इज अनसर्टेनिटी as to the fruit itself, right? So any contract which is uncertain, which is vague, again cannot be a valid one. Such a contract will be void, right? तो ये बहुत specifically void होता है. Similarly, this is also something which has come in your exams earlier. In this, it says A agrees to sell to B 1,000 mounds of rice at a price fixed by C. So will this be a valid or invalid agreement? अब यहाँ तो इस पे आंसर ही दिया, I should have erased the answers, है ना? But obviously, since it is a price fixed by C, there is no uncertainty to it, right? There is a very good certainty, because यहाँ पे जो C बोलेगा वही प्राइस फिक्स हो जाएगा, right? तो अब C अगर 100 रुपीज बोलता है तो 100 रुपीज प्राइस होगा, अगर C 1000 रुपीज बोलता है तो 1000 रुपीज प्राइस होगा, right? Because here we are not saying that the price will be determined at a future date because of some uncertain events. ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत एक specific चीज की वजह से there is a price fix, so this is going to be a valid contract, right? So यहाँ पे this is going to be valid. So that's the basic idea behind when you say contract agreement which is not certain. So if it is not certain, it is vague, you cannot really make out what the terms of the contract, your obligations under the contract, तो फिर वो contract void होगा. Okay, चलो, if anybody has any doubts, then you can always put it in the chat box. I have it open right here. Okay, so let's move on to the next one. Next we have is agreement in restraint of marriage, right? So when you are talking about agreements in restraint of marriage, restraint का क्या मतलब होता है? Restrict का, right? Restraint means restriction. तो ऐसा कोई भी agreement जो आपको restrict करता हो marriage करने से, then that is going to be void. Now here it means that if A and B get into a contract in which A tells B that I will marry you, and B agrees that B will marry A, will this be in restraint of marriage, or will this be a valid contract? A tells B that boss, I want to marry you. B agrees that yes, I also want to marry you. So offer हुआ और उसका acceptance हो गया. तो ये अभी valid होगा या ये void होगा? ये valid होगा, right? This is going to be valid. On the other hand, अगर इसी contract में ये लिखा है, A makes a offer to B that B, I will marry you and you will not marry anybody else but me, right? So here, what is A telling? I will marry you and you will not marry anybody else but me. B agrees to it. B says, fine, I will also marry you and I will not marry anybody else but you. Can this contract, can this agreement be enforced? मान लो B किसी और से शादी कर लेता है. He goes and marries X. Can there be a breach of contract which A can file against B? Can there be a breach of contract which A can file against B? Is this valid or invalid? अगर valid है, then he can file a case of breach of contract. अगर void है, तो he cannot file. तो ये contract, is it valid or is it void? Okay, I'm getting void, I'm getting invalid, I'm getting valid. Okay. अब यहाँ पे, okay, I think most of you got it void, only a few have marked invalid. बस ये contract invalid. क्यों? क्योंकि यहाँ पे restriction लग रहा है, ठीक है? पहले contract में restriction नहीं लग रहा था. पहले contract में था कि भाई तुम मेरे से शादी करोगे and मैं तुमसे शादी करूंगा, right? So there it was a mutual agreement to marry. On the other hand, जब हम दूसरे question में जाते हैं, दूसरे question में restriction लग गया कि भाई तुम मेरे से ही शादी करोगे, किसी और से शादी नहीं करोगे. Right? So the moment there is a restriction on your right to marry, that is going to be void.
So whether it is a restriction to marry one person or it is a restriction to marry, from a particular class of persons, right? I could say that, you cannot marry people who belong to the state of Jammu and Kashmir, right? You cannot marry anybody belonging to the state of Jammu and Kashmir. And for that, I will give you 10 lakh rupees. So in that case, what is going to be the validity of the contract? Is it a void or is it a valid contract? It is obviously going to be a void contract, right? वो void होगा because वहां पे आप class of person से marry नहीं करने दे रहे हो. तो कोई particular person या class of person या not marry anybody at all. I tell you that boss, I'll give you 10 lakh rupees if you don't marry anybody, and you more than happy agree to it. ये 10 lakh रुपए तो मिल जाएंगे. But in that case, will that be a valid contract? अगर उस बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए, you don't even marry. That guy says, if you don't marry for the next 5 years, at the end of 5 years, I'll give you 10 lakhs. So you end up not marrying for the next 5 years, right? At the end of 5 years, you ask him for the money. Let's say he refuses to pay the money. Can you file a case against him to recover that money? आपने 2015 से 2020 तक शादी नहीं करी, ये सोच के that the end of 2020 you will get 10 lakhs. This person now refuses to give you the 10 lakhs. Can you sue him to recover the 10 lakhs? Yes or no? Can you sue him now? You did not marry for 5 years because of this fellow. Can you sue him? You cannot sue him, right? Why? Because ye restraint of marriage. This was a contract which had put a restriction on you on, right? तो ये चाहे सबके लिए हो, चाहे किसी particular person के लिए हो, चाहे class of person के लिए हो, in all the scenarios, that particular agreement is going to be void, right? एक exception क्या carved out है इसमें? An agreement regarding minors, right? So if there is an agreement which says that, there's a kid who's like 10 years old and A gets into a contract regarding the marriage of this child, and he says that this child will not marry for the next 5 years, and for that B is willing to pay 10 lakhs. Will this contract be valid or void? Will this contract now, in which A, who is agreeing that 5 years तक जो ये child है ये marriage नहीं करेगा, in that case, let's say for 5 years he did not marry, and when this child turns 15, A asks money from B. B refuses. Can A sue B to recover the money? Why? Because यहाँ पे एक minors के लिए exception create किया हुआ है, right? तो ये minors का exception में cover होगा. Otherwise, such a contract will clearly be a void contract, right? So such a contract is valid only because of this exception so far as minors are concerned, right? He can sue. Why? Because this is a contract relating to a minor. तो अगर minor की शादी को restrict करने के लिए कोई contract बनता है, such a contract is going to be valid. Okay, that is an exception carved out within restraint of marriage. Now let's move on to the next one. I hope this is clear. अगला हम आता है हमारा अब agreement in restraint of trade. Now this is again a very very often tested area. Last year के exam में तो ये पूरा का पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन ही आया था इससे. Like this entire passage which was based on restraint of trade, restraint of judicial proceedings, right? So this is something which is often tested area, something which you should have good clarity about, right? अब इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं. तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये तो क्लियर कट है कि जो आपका सेक्शन 27 है इसका, वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, व्हाट डज इट टेल यू? दैट एन एग्रीमेंट बाय व्हिच अ पर्सन, दैट मींस यू कैन नॉट हैव एनी एग्रीमेंट व्हिच रिस्ट्रेन्स अ पर्सन फ्रॉम प्लाइंग एनी ट्रेड प्रैक्टिस. मतलब आप अपना कोई बिजनेस, ट्रेड, प्रैक्टिसिंग एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, कुछ भी से आप किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपकी जहां से ये 27 का रिस्ट्रिक्शन ओरिजिनेट किया है? कैन एनीबडी टेल मी व्हिच
is the fundamental right involved here, which gives you this right to carry on or practice any trade, any any business, any profession? Which is the article which gives you this particular right? Good, Ria. That is your Article 19, right? Right. Article 19(1)(g है जो हमारा, वो हमें बताता है कि भैया आपके पास freedom है. Article 19 is all freedoms, right? So the last of the freedoms here is the freedom to practice trade, business, and all those things, right? Now, वहाँ पे भी, so taking cue from there, if you look at this particular restriction on a valid contract, what does it say? कि आप किसी को भी restrain नहीं कर सकते, which means that I cannot get into a contract with you saying that you will not carry on your business for the next 5 years. मान लो आप बहुत अच्छी पेंटर हो, okay, आपका पेंटिंग का काम है, and आप घर पेंट करते हो आप, and you are a very good painter, and I am also starting a business of painting, right? But I feel that you already are an established painter. So what do? I tell you कि boss, I will pay you 20,000 rupees per month, तू घर पे आराम कर, and you don't do this painting का काम anymore, right? So consideration from your side will be not painting. Consideration from my side will be giving you 20,000 per month for sitting aram se in your house. Will this contract be valid? Will this contract be valid? Wherein all we are doing is asking you not to paint, and I'm going to pay you 20,000 rupees per month. कायदे से देखा जाए तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हैं. कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया है, बोथ ऑफ अस आर लेट्स से मेजर अडल्ट्स, तो अब मैं यहाँ पे कैपेसिटी भी है, देयर इज फ्री कंसेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट? सो इफ यू लुक एट इट, all the valid ingredients, all the ingredients which are needed for a valid contract are present, but still this contract is going to be considered as void, right? That's the exception, right? So सारे ingredients हैं, फिर भी contract जो है वो void होगा because it is restricting. Now again there is a restriction so far as trade is concerned, right? So here in the act itself there is one exception which is provided. What is that exception? That exception is for sale of goodwill, right? तो अगर आप goodwill का sale कर रहे हो, then you can put an exception, put a restriction on the person who is buying your business. Because goodwill क्या होती है? What is goodwill? I think everybody knows what is goodwill. Commerce वाले बच्चे तो goodwill को asset side में अपने दिखा दिखा के थक गए हैं class 11th से, right? So when you are talking about goodwill, goodwill is basically, it is an intangible asset. Yes, more jargon. अभी asset तो है और वो intangible है. That means you can't touch and feel. Okay. And what else? Okay. Yep. Sanya is telling me it is your reputation, right? ठीक है. तो आपका reputation है. So when you are talking about goodwill, goodwill is the reputation which you enjoy, right? The monetary valuation of your brand, जो brand value बोलते हैं ना कि बॉस आपका goodwill, जैसे हम कई बार example देते हैं कि बॉस का कोई छोटी सी दुकान है पर आपने बहुत you sold it at a very premium price. Why have you sold it at the premium price? Because of the brand name that you have. Right? Like, lot of times when we're discussing this concept in the class, I'm always reminded of those samosa walas, छोटी-छोटी दुकानें होती हैं, but they make so much of profit, right? तो वो ठग्गू मल के जो समोसे होते हैं, वो पिछले 50-100 साल से दिल्ली की एक गली में वो अपनी छोटी सी दुकान में अपने समोसे बेच रहा है, right? And when one fine day he doesn't want to sell the samosas anymore, he sells the shop to you. राइट? और आप आए और आपने जाके वहां पे समोसे की दुकान जब खरीदी, तो क्या आप वो 4x4 की समोसों की दुकान के लिए हाउ मच डिड यू पे? You paid, let's say, close to 2 crores. And why did you pay those 2 crores? Did you pay those 2 crores because of the fact that उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, या उसमें जो कढ़ाई और जो गैस चूल्हा था वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का था? नहीं. Why do you pay that money? You pay that money for the reputation that person enjoys, right? वो जो reputation वो enjoy करता है market में, जिसकी वजह से पूरे शहर के ही नहीं, people whoever is coming to Delhi has to go and eat the samosas in ठग्गू मल दुकान,
right? So here, when you are selling, when you are buying that shop from him, you are buying not only the physical shop, you're also buying the intangible, like somebody told me, the intangible asset, right? तो intangible asset क्या है यहाँ पे? Goodwill. And जब आप goodwill खरीद रहे हो तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि वो 2 गली छोड़ के अपनी नई समोसे की दुकान खड़ी कर ले. Would you want that? No, you would not want that. Otherwise, what will happen? All the customers that you had paid all that money for are not going to come to your shop. वो तो सब बगल वाली दुकान में चले जाएंगे, right? So you don't want that. So here, when you are buying that particular shop, you would also want to put certain restrictions on this person. But ये restrictions भी जब आप put करते हो, ये restrictions unreasonable नहीं हो सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिस्टर ठग्गू से बोलो कि भाई आप कभी इस एरिया में दुकान खोल ही नहीं सकते. इस एरिया में आप कहीं भी आपने आपसे उससे कॉन्ट्रैक्ट करा, can you put a restriction that you can never open a shop anywhere in the country, selling samosas? Can that restriction be put? That I am buying your shop along with your goodwill, so therefore you can never open a shop anywhere in the country. Can you put such a restriction? Like Nimisha is telling me, no, you cannot put that restriction. Why? Because this restriction, the exception here, is also something which has to be reasonable. Right? This restriction is not an absolute sort of a restriction, because the way it is framed within the act, वो आपको बोलता है कि भाई refrain from carrying on a similar business. That means अगर वो समोसों की दुकान थी तो आप समोसे, कचौड़ी, ब्रेड पकोड़ा ये सब नहीं बेच सकते. बट अगर वही वहां पे कपड़े की दुकान खोलना चाहता है, उसको 2 करोड़ मिल गए तो बड़ा सा शोरूम खोल के एडिडास की आउटलेट खोलना चाहता है, कैन यू पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट? राइट, दैट इज नॉट अ सिमिलर बिजनेस. ठीक है, तो सिमिलर बिजनेस होना चाहिए विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स. अगेन, इट कैनॉट बी कि आप कहीं भी दुनिया में दुकान नहीं खोल सकते. दिस रिस्ट्रिक्शन हैज टू बी विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स. Right? So here, when you are looking at this, you realize कि ये restriction जो है ये reasonable होना चाहिए. ये restriction unreasonable नहीं हो सकता. तो this exception is also subject to certain reasonableness. अगर reasonable नहीं है, एकदम ही absolute ban type लगा रहे हो आप वहां पे, जैसे constitution में हम लगाते हैं ना absolute ban वाले question, अगर वैसा absolute ban type लग रहा है, then that is not going to be covered under a valid exception. Right? So this is one thing which you keep in mind whenever there is a question of goodwill, that this restriction has to be reasonable. Now, another kind of questions which come on restraint of trade are the ones which relate to non-compete clause. Non-compete is the fancier name for an agreement in restraint of trade, right? But यहाँ non-compete जब आप use करते हो तो non-compete क्या बोल रहे हो? Beyond the terms of the contract void hoga, during a contract it will not be void. Which means if I am working for a particular organization, can that organization put a restriction on me कि भाई जब तक आप हमारे साथ काम कर रहे हो आप किसी और के साथ काम नहीं करो. राइट, जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड के साथ होता है. पेप्सी ने किसी को ओपन किया है कि भाई अगर तुम पेप्सी वाले बोलते हैं अगर तुम हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो तुम कोको कोला के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते. होता है ऐसा? Yes, it happens. And why that happens? Why? Because यहाँ पे क्या बोलते हैं कि beyond the terms of the contract restriction नहीं होगा. It is only during the term of the contract. If there is a restriction, that restriction is considered as valid. तो अगर आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप 5 साल तक किसी और के लिए काम नहीं कर सकते, that is not be considered as restraint of trade. But अगर आपने बोला कि 5 साल कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगले 5 साल और आप कहीं वो काम नहीं कर सकते हो, then that will be considered as restraint of trade, right? So it is only in the terms of the contract that it is going to be valid, right? Similarly, एक और question कई बार इस पे आता है former employees का. तो अगर कोई former employee है, उसके ऊपर restriction लग सकता है क्या? उसके ऊपर सिर्फ limited restriction लग सकता है. Limited restriction क्या है? For use of trade secrets, right? तो अगर trade secret है तो वो trade secret वाला restriction उसके ऊपर
लग सकता है कि भाई वो आपका सीक्रेट है, मे बी इट्स अ कंपनी डीलिंग विद IT, right? And they have certain codes which have been, created by the people there in the company. If you move on to a new company, can you use those there? No, right? Let's say आप KFC के लिए काम कर रहे हो, KFC की रेसिपी आपको पता चल गई, तो आप किसी और रेस्टोरेंट में जाके वो KFC वाली रेसिपी यूज कर सकते हो? नहीं, वहां पे आपका रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, बट दैट्स ओनली इफ इट्स रिलेटिंग टू अ ट्रेड सीक्रेट, राइट? तो वो ड्यूरिंग एंड आफ्टर दोनों में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, बट इफ इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ नॉलेज दैट ही हैज गेन्ड, राइट? लेट्स से जब वो ज्वाइन किया था वो सिर्फ एक he was just a peon, but over the years he worked in that organization for 5 years and he learned how to type. तो क्या ये टाइपिंग वाली जो उसकी नई उसने गेन करी है नॉलेज, कैन ही यूज इट समवेयर एल्स? यस, इस पे आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता, राइट? सो इफ देयर इज सम नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड, मे बी यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, right? So slowly you were at a clerical level. Thereafter, you actually became one of the analysts. You gained all that knowledge. Can you go and work as an analyst with some other trading company, with some other brokering company? Can you do that? ऐसा हो सकता है कि किसी और ब्रोकरिंग कंपनी के लिए आप काम करने लग जाओ आफ्टर लर्निंग हाउ टू आफ्टर यू लर्न द स्किल ऑफ ब्रोकरिंग? या आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है? आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ नॉलेज दैट यू हैव गेन. तो अगर नॉलेज जो आपने गेन किया है वो आप यूज कर सकते हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन अगर लगेगा देन दैट विल बी इनवैलिड. बट अगर कोई ट्रेड सीक्रेट है वो वाला रिस्ट्रिक्शन आपका लग सकता है, right? So that is the basic idea when you which you keep in mind in cases of a non-compete clause, right? एक और एंगल इसमें कई बार आता है which is on trade combination, कि भाई अगर ट्रेड कॉम्बिनेशन है बिटवीन ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, कि यहाँ पे देयर इज अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, उन्होंने डिसाइड करा है कि भाई हम अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्स प्राइस से नीचे नहीं बेचेंगे, then in that case will that be something which is in restraint of trade? Let's say A, B, C, D, A, B, C, D, all of them decide that they will not sell their goods for less than 100 rupees. फिर मान लो बिक ही नहीं रहे थे, सी जिस एरिया में रहता था वहां पे nothing was selling, so what did he do? He started selling goods at 80 rupees. Can A, B and D file a case against him for breach of contract? Yes, Sadak, you cannot KFC का चिकन की रेसिपी नहीं बता सकते, बस ट्रेड सीक्रेट है ना. अब यहाँ पे मुझे बताओ, कैन सी फाइल अ के कैन A, B and D फाइल अ केस अगेंस्ट C? Yes or no? Because here what is happening, they are having a trade combination, right? तो जहां पे ट्रेड कॉम्बिनेशन होता है वहां पे this is not considered as a restraint of trade, right? It is considered as valid, right? So here even if they are putting a restriction that you cannot sell it below 100 rupees, that is a restriction indeed, but it is not considered as under restraint under Article 27. Okay, the business combination, manufacturers, all this would be considered as valid. ठीक, I hope this is clear. एक इसी में जैसे नॉन कम्पीट होता है वो एनडीए वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, अगेन ऑन सिमिलर लाइंस, राइट? सो नॉन डिस्क्लोजर भी हो सकता है, जो ये ट्रेड सीक्रेट्स वाला कॉन्सेप्ट है ये कई बार एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स के फॉर्म में आता है. तो जब आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स करते हो उसमें भी वही होता है, इफ इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द कंपनी, then even beyond after you quit working there could be a restriction on you that you will not disclose the knowledge that you gained while you're working for the first company. Take, okay, let's move on to the next one, which is an agreement in restraint of legal proceedings. So when you look at an agreement in restraint of legal proceedings, इसमें क्या होता है, there has to be an absolute restriction, right? So if you are entering into an agreement which absolutely restricts you from enforcing your right,
under any contract, then such an agreement would be considered as void, right? And कैसे कोर्ट से, जहां यूजुअल प्रोसीडिंग्स होती है, राइट? तो नॉर्मली अगर मान लो ए बी सी डी ये सारे कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन है, तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स क्या बोलेगा? देयर हैज टू बी एन absolute restriction, which means that there's an agreement which says that you cannot go to court A, you cannot go to court B, you cannot go to court C, and you cannot go to court D. A, B, C, D में से कहीं भी आप केस फाइल नहीं कर सकते. Such an agreement would be considered in restraint of legal proceedings, right? And what if I say that I will file a court case in court E? Will this be valid or invalid? There's a contract between X and Y and they decide that A, B, C, D में तो कोई केस नहीं फाइल करेंगे, जो आपके यूजुअल प्रोसीडिंग्स वाले कोर्ट हैं, कोर्ट जिनका नॉर्मल जुरिस्डिक्शन है, ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है, उसकी जगह हम ई कोर्ट में केस फाइल करेंगे. So is this agreement valid or void? Is this agreement valid or void? This agreement is going to be giving, is an agreement in which you are granting jurisdiction to a court which does not have jurisdiction. Ordinarily, court E does not have jurisdiction, but now you are giving jurisdiction to court. This will be not valid. This will be not valid. Why not valid? Because आप किसी ऐसे कोर्ट को jurisdiction grant नहीं कर सकते जिसके पास already है ही नहीं. You can select from A, B, C, D, but you cannot give jurisdiction to a court which ordinarily does not have jurisdiction. Always remember this. This will be invalid. Okay? यहाँ पे आपने जितने भी ordinary jurisdiction वाले थे सबको बंद कर दिया और आपने एक नए कोर्ट को jurisdiction दे दिया, which is something not allowed. You cannot grant. This entire contract will also be not valid. On the other hand, if they decide that only courts in B will have jurisdiction, this is going to be a valid. Why? Because यहाँ पे absolutely आप restrict नहीं कर रहे. अगर absolute restriction नहीं है, then it is going to be valid. ठीक है? तो absolute restriction नहीं होना चाहिए और किसी नए कोर्ट को आप jurisdiction नहीं grant कर सकते. और इसका exception क्या होता है? Arbitration. Right? And ये arbitration के लिए it might be a dispute that may arise. That means you already enter into a contract in which you say कि बॉस अगर कोई भी dispute इस contract से होगा तो हम उसको arbitration के लिए भेजेंगे. We are going to refer it for arbitration. So if when you refer it for arbitration, in effect what are you saying? That A, B, C, D जिन कोर्ट्स का यूजुअल जुरिस्डिक्शन है उनको आप नहीं दोगे, रादर यू ओनली सेंडिंग इट फॉर आर्बिट्रेशन. तो आप एब्सोल्युटली बार कर रहे हो, बट स्टिल दिस इज एन एक्सेप्शन व्हिच हैज बीन कार्व्ड आउट, राइट? सो क्वेश्चन मे अराइज. एक और चीज क्या बोलता है यहाँ पे लॉ? क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी अरिजन. दैट मींस कि मान लो जब ये आपने ए एंड बी, यहाँ पे मिस्टर एक्स एंड वाई का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं था, राइट? बट यहाँ पे जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और अब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे. कैन दे डू दिस? हियर द ब्रीच हैज ऑलरेडी अकर्ड. आफ्टर दिस कैन दे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू रेफर दिस मैटर फॉर आर्बिट्रेशन? यस आयुष, एग्जैक्टली. क्या यहाँ पे can they refer this matter to arbitration after the breach has already occurred? Yes, they can. Because that's exactly what the second part is talking about. Questions that have already arisen. That means the breach has already taken place and later on you are saying we are not going to the court, rather we are going in for arbitration, right? So that's the second part. Now let's move on to B. B क्या बोलता है? Which extinguishes the right of any party thereto or discharges. Basically क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपकी लिमिटेशन की, जो पिछली क्लास में भी हमने ये चीज टच अपॉन करी थी. ये बात कर रहा है लिमिटेशन की.
यहाँ क्या बोल रहा है, नॉर्मली आपके पास देर इज अ राइट एंड अ लायबिलिटी विच अक्रूज टू अ सर्टेन पर्सन, एंड ये जो लायबिलिटी होता है इसका टाइम फ्रेम होता है, राइट, कब तक आप लायबल रहोगे। सो वो टाइम फ्रेम कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है आपको, लिमिटेशन एक्ट के अंदर, कि अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर भाई इतने टाइम तक आपको आपके अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं। What B is saying is that you cannot reduce this liability which you have the right to, to, there can be a case which can be filed against you. So ये जो आपकी liability है ये तब तक रहेगी. That means can there be a contract in which नॉर्मल लिमिटेशन पीरियड इज 3 years, कि भाई 3 साल तक आप केस फाइल करते हो, आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि भाई नहीं, मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स द अदर पार्टी विल ओनली बी देयर फॉर 1 year, 1 साल के बाद आप मेरे पास केस नहीं फाइल कर सकते। कैन दिस बी द केस? This cannot happen. Why? Because by this, what are you doing? You are restricting the right of a party to enforce his rights. Yeah, you are restricting the other party's right to go to the court. Limitation Act gives you 3 years. You cannot have it being restricted to 1 year, right? But this is only restriction. That means अगर मैंने बढ़ा दिया 3 years दिया है और मैंने 5 years कर दिया, will this be valid? Yes, this will be valid, right? This is going to be valid. Okay, Ayush is saying arbitration is post breach of contract also. Yes. Yes, Ayush, that's the second part, that the questions have already arisen. तो वो post breach of contract में भी हो सकता है. ठीक? I hope this is clear. ठीक है ना? This is something which has come in last year's paper, so you should be aware of this. Let's move on to the next one. Next is when you're talking of wagering agreements. Wagering agreements क्या होते हैं? Basically, when you are talking about betting agreements, right? What is important for a wagering agreement is that should be based on a future event, right? This is important. Future event कैसा? Uncertain and completely unrelated. ठीक है ना? अनसर्टन भी होना चाहिए और अनरिलेटेड भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये अनरिलेटेड नहीं है तो फिर ये क्या बन जाता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये अनरिलेटेड नहीं है तो ये हो जाएगा कंटिंजेंट। बिकॉज वेजरिंग क्या होता है कि बॉस कल इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, अगर इंडिया जीता तो तू मुझे 10,000 देगा, पाकिस्तान जीतेगा तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगी, राइट? अब ये फ्यूचर इवेंट के ऊपर आपकी लायबिलिटी बेस्ड है। ये फ्यूचर इवेंट कंप्लीटली अनसर्टेन है, वी डू नॉट नो हु इज गोइंग टू विन, हु इज गोइंग टू लूज, एंड दिस फ्यूचर इवेंट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू अस। हमसे कोई लेना देना है ही नहीं, राइट? हमसे अगर कोई लेना देना नहीं है तो फिर वो वेजरिंग होगा एंड सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी वॉइड। ऑन द अदर हैंड, अगर ये अनरिलेटेड नहीं था, ये इवेंट आपसे रिलेटेड था, तो फिर वो क्या हो जाता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि होते हैं वैलिड। Somebody had asked me right in the beginning when we were talking कि भाई मैम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करवा दो। बच्चा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर बेस्ड होता है, बट दैट फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज नॉट एलियन टू द पार्टीज। वो पार्टी से दूर या हटके नहीं होता है, वो पार्टी से रिलेटेड होता है, राइट? सो इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच आई एम सेइंग कि बॉस अगर तुम्हारा एनएलयू में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अगर तुम्हारा एनएलयू में सिलेक्शन हो गया, देन इन दैट केस आई विल maybe as a parent, your parent tells you कि भाई हम आपको एक मैकबुक गिफ्ट कर देंगे, तुम जाओ तो सही, तुम एनएलएसआईयू बैंगलोर पहुंचोगे एंड तुम्हारे क्या बोलते हैं हॉस्टल के कमरे में एक नया मैकबुक प्रो जो है वो रखा होगा, राइट? सो इन दैट केस व्हेन यू लुक एट that liability on your parent side to give you that MacBook, which will arise only and only if तुम्हारे NLU में होगा. That is a future event which is uncertain, right? तुम लोगों को अपनी तैयारी करके जितना भी certain लग रहा है अभी कि ना हम तो पहुंच ही जाएंगे, some of you might be feeling that. I'm hoping, praying from the bottom of my heart that ये actually true हो जाए, that you actually have a nice
room in NLSIU Bangalore or one of your dream NLUs, तो मान लो तुम वहां पहुंचोगे जब, तभी वो liability arise होगी. So future uncertain event है, but ये unrelated नहीं, ये very much related है. तो अगर वो related है आपसे, तो फिर वो आपका contract जो है contingent होगा, right? It's not something which you have no role to play with in, right? You have a role to play in this. So this is going to be considered as a contingent and a valid contract. Okay, so always keep this in mind. Contingent में related होता है, wagering में related नहीं होता है. वेजरिंग में कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं होता है. वो जो ड्रीम्स 11 वाला क्वेश्चन आता है कि भैया अगर ड्रीम्स 11 टाइप टीम बनाई है आपने, तो क्या वो वेजरिंग होगा? नहीं, बिकॉज वहां पे आप स्किल यूज कर रहे हो. वहां पे अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, राइट? तो जहां आपसे कुछ रिलेट हो गया, स्किल इन्वॉल्व हो गया, तो वो वेजरिंग नहीं होगा. देन इट विल बी अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज गोइंग टू बी अ valid contract, right? So these were basically all the void agreements or void contracts, right? This is one exception wherein even though all the ingredients are present, still the contract is going to be void. On the other hand, एक और जो exception होता है under the Contract Act is the quasi contracts. Now quasi contracts are contracts, जैसे quasi का मतलब always होता है कि almost there but not really, है ना? तभी हम क्वाजी जुडिशियल बॉडीज भी बोलते हैं. जब आप क्वाजी जुडिशियल बॉडी या फिर हम क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, कि भाई एकदम फेडरल नहीं है, तो एकदम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, राइट? सो समथिंग व्हिच इज akin to a contract but not like a contract is what is known as a quasi contract, right? तो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ मिसिंग है. आप हमने जो इनिशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स करे थे उसमें से कुछ मिसिंग होता है, इसीलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. दैट इज व्हाई एग्जांपल्स ऑफ दिस आर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नेसेसिटीज. जब आप नेसेसिटीज की बात करते हो, व्हाट इज इट? हियर यू आर टॉकिंग अबाउट सप्लाइंग थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी टू पीपल ए हु आर आइदर माइनर्स और पीपल हु आर ऑफ अनसाउंड माइंड, राइट? तो अगर माइनर हो, अनसाउंड माइंड के हो, इसको अगर आपने नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई करी है, देन यू कैन बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच अ पर्सन. यहाँ पे आप इंडिविजुअल से जाके माइनर से, अनसाउंड माइंड के पर्सन से पैसे नहीं ले सकते, और उसकी प्रॉपर्टी से आप ले सकते हो, राइट? ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन. सो बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर और विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज ऑलवेज वॉइड ab initio, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी अदरवाइज तो अराइज हो ही नहीं सकती. बट यहाँ पे आपने एक एक्सेप्शन क्रिएट किया जहां पे आप बोल रहे हो आप ले सकते हो बट ओनली फॉर द प्रॉपर्टी. दैट्स वन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड आता है एग्जांपल व्हेन ही से रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, राइट? सो इट्स समथिंग लाइक कि आपका लैंडलॉर्ड जो था मिस्टर ए, उसको पैसे देने थे प्रॉपर्टी टैक्स के, राइट? अब प्रॉपर्टी टैक्स के वो पैसे दे नहीं रहा है, तो भाई आप मिस्टर बी हो जो कि टेनेंट हो, जिसको पता है कि अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ तो फिर भाई सरकार आने और पीपल आर गवर्नमेंट पीपल आर गोइंग टू कम एंड दे आर गोइंग टू ensure that this B is thrown out of the property. They are going to come and take over the property. Then in that case what he does, B pays the property tax. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, liability किसकी थी? A की, but it is B who is making the payment in something which he is interested, because if he doesn't make the payment he'll be thrown out of the property, right? So here even though A never asked B to make the payment, still B can recover this money from A. ये होगा reimbursement जो A करेगा B को, because B has paid on behalf of A even without A asking him to pay, right? Normally यहाँ पे ऐसे केस में ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा बॉस मैंने तो तुझसे नहीं बोला पैसे देने को, you paid it out of your own accord, why should I suffer, right? But then here he can recover it. Why? Because it was paid by B on A's behalf in something which B was interested, right? So this is also like a quasi contract. Basically a liability is arising even though there was no offer, there was no acceptance, because यहाँ पे क्या हो गया, the person is acting on his own accord. ठीक?
That is also a type of a quasi contract. Next is when you are talking, ये Domino's pizza वाला आता है, right? कोई Domino वाला आया, टिंग टोंग घंटी बजाई उसने आपके सामने आपको पिज्जा दिया, आप बड़े खुश हुए, आपने पिज्जा ले लिया और पिज्जा गॉबल अप भी कर लिया आपने, राइट? आधे घंटे बाद वो दोबारा आया टिंग टोंग, बस गलत डिलीवरी हो गई थी, आइदर ये रहा बिल, 500 रुपए का बिल दे दो वरना पिज्जा दे दो। मैं बोला कौन सा पिज्जा, वो तो मैंने खा लिया, right? And why should I pay you? Boss, I never asked for it. You gave it to me You gave it to me. I never asked for it. So, kaide say, should there be a contractual liability? No, because you gave it to me. I never asked for it. But here, you obviously know that he's not giving it for free. Gratuitously means something you're doing for basically free, right? अगर ये gratuitous तो नहीं है, तुम्हें भी पता है डोमिनोज वाले फ्री में तो पिज्जा नहीं बांटेंगे। अगर आपने पिज्जा खा लिया है, then in that case, what can you do? You cannot refuse paying the money. You would be liable to pay that money, right? So this is the obligation of person enjoying benefit of a non-gratuitous act, right? तो ये नाम बहुत बड़ा सा और थोड़ा सा it's sort of a scary thing कि ये है क्या, but ये concept बहुत simple है. Always remember, मतलब for me normally the moment I see this question मेरे तो Domino's pizza याद आ जाता है, right? So just keep that Domino's pizza in your mind the moment you see something like this, and that funda is going to be clear for you. Okay? ठीक है? तो अब इससे तो डिनर टाइम भी हो रहा है, मेरे को भी डोमिनोज खाने का मन कर रहा है, but no junk. Okay, chalo. Anyways, we are towards the end now, and one of the last things that we have to do is responsibility of finder of goods. Finder of goods की क्या responsibility होती है? Just like a bailee, right? So if you're a finder of goods, it means you found something lying, then it's not as though you can keep it in your pocket and go away. In fact, if you keep it in your pocket and go away, are you committing some criminal wrong? Yes, Ayush, वो rice bag वाले question भी आते हैं इसमें, when you talk about the Domino's pizza वाला, you're right on that. हाँ जी, इसको अगर ये क्रिमिनल लायबिलिटी होगी तो क्या क्रिमिनल लायबिलिटी होगी इसमें? थेफ्ट होगा? नहीं, मुझे एक वो टिपिकली क्वेश्चन आता है डायमंड रिंग वाला, मुझे डायमंड रिंग सड़क पे पड़ी हुई मिली, आई पुट इट इन माय पॉकेट एंड आई टेक इट अवे. Will I be liable for a criminal offense under this? Yes, I am going to be liable for criminal misappropriation. Good, Sanya. I'll not be liable for theft. I'm going to be liable for criminal misappropriation. Misappropriating something appropriating something for yourself which does not belong to you, which you do not have any right over, right? So normally a criminal misappropriation होगा, but अगर आपने मान लो वो चीज रख ली है संभाल के, थिंकिंग कि आप उस बंदे को दोगे, तो आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे इंटेंशन आपका बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर है, देन इन दैट केस what are you going to be responsible for? You are going to be responsible for it like a bailee, right? And bailee कौन होता है? जो contract of bailment में होता है, right? Bailment में the person who is given the movable property is known as the bailee, जो देता है is known as the bailer, right? तो bailee की क्या responsibility होती है? To take reasonable care of that particular commodity like a man of ordinary prudence, right? तो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस की तरह आपको उसका टेक केयर करना पड़ेगा. डायमंड रिंग है तो उसको आप संभाल के रखोगे, उसको आप अपने दुकान के मेन काउंटर पे नहीं रख दोगे. अगर काउंटर पे रखोगे तो कोई और वहां से उठा के ले जा सकता है, right? On the other hand, keep it safely, and let's say somebody left a ring like that and you leave it on the counter and कोई आया बाहर से थर्ड पार्टी दुकान में आया, वो रिंग उठा के ले गया, can you be held liable for the loss of that ring? Yes, you can, right? Because you're not taking care of it like a man of ordinary prudence, right? Ordinary prudence बोलते हैं या हम उसको reasonable man बोलते हैं.